सेल्स, सेल्स कहाँ जाएगा? सेल्स इज योर फर्स्ट आइटम. यूज चैट बॉक्स टू आंसर. ओके. ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, COGS. Staff salaries, staff salaries, office. Salesman salary, salesman salary, salesman salary. Selling, selling and distribution. Correct. Bank charges, bank charges. Finance. Correct. Freight inward, freight inward. COGS. Correct. Office rent and insurance, office rent and insurance. Office. Debenture interest, debenture interest, debenture interest. इंटरेस्ट, डिबेंचर इंटरेस्ट कहाँ जाएगा? इंटरेस्ट में. लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. करेक्ट. अनुष्का इज रिप्लाइंग वेरी नाइसली. others following her. Good. Komal, Divya and Zakira. Printing and stationery, printing and stationery. Office. Correct. Direct expenses, COGS. Very good. Profit and loss account credit. This is opening balance of profit and loss account. ये क्या दिया है आपको? Opening balance of profit and loss account. This is opening balance of profit and loss account. Okay. Depreciation on patents, COGS. Depreciation on machinery, COGS. Next. रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है? रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय रिटर्न इनवर्ड? गुड्स रिटर्न आए. व्हाट डज इट मीन्स? सेल्स रिटर्न. यस. सेल्स रिटर्न लेस फ्रॉम सेल्स. परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कहाँ जाएगा? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, COGS. Commission allowed, selling and distribution. Transfer to general reserve, transfer to general reserve. Appropriation. Exhibition expenses, selling and distribution. Repairs of computers, office. Closing stock of WIP, COGS. Wages, COGS. Purchase of finished goods, COGS. Interest received on investment, non-operating income. Correct. Provision for income tax.
less tax. Closing stock of raw material, COGS. सेल ऑफ स्क्रैप डायरेक्ट एक्सपेंसेस में से माइनस होगा, लेस फ्रॉम डायरेक्ट एक्सपेंसेस. ओके. You are required to rearrange the information and prepare vertical income statement suitable for analysis. Start करें? Can we start? चलो, let us start. Yes, Pooja, any doubt? मैम गलती से हो गया. Okay. So we are preparing income statement. Problem में income statement पूछा है तो हम लोग income ही लिखेंगे. Of Measures Anvita Limited. Sales 20 lakhs. लेस रिटर्न्स. प्रॉब्लम में रिटर्न्स दिया हुआ है, ये देखो ऑपोजिट में ही दिया हुआ है, लेस रिटर्न इनवर्ड्स दैट इज सेल्स रिटर्न 50,000. सो माइनस करेंगे 50,000 तो आउटर कॉलम में आंसर आएगा सेल्स लेस रिटर्न्स. सो आंसर आएगा 19,50,000. करेक्ट है? इज इट करेक्ट? अभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में पहले तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है. कितना दिया हुआ है? 1,10,000. 1,10,000. एड परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल किधर है? देखो परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल मेरे ख्याल से यहाँ पे है. परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल 5 लाख. फ्रेट भी था कहीं पे, फ्रेट इनवर्ड 40,000. यहाँ पे लिख देंगे फ्रेट इनवर्ड 40,000. इम्पोर्ट और ऑक्ट्राई ड्यूटी नहीं है, ये निकाल देंगे. जो नहीं है उसको रख के कोई फायदा ही नहीं है.
डिलीट। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज 80,000 माइनस 80,000। तो ये 1,10,000 प्लस 5 लाख प्लस 40,000 करो कितना होता है? इट कम्स टू 6,50,000। 6,50,000 में से 80,000 माइनस किया तो कितना बचेगा? 6,50,000 में से 80,000 अगर माइनस किया तो कितना बचेगा? 5,70,000 is your 5,70,000 is your raw material consumed, करेक्ट है? यस। गोविंद खाली यस मत लिखवा। नेक्स्ट WIP, अभी देखते हैं WIP दिया है क्या कहीं पे। तो WIP दिया था, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP दिया है, ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया है। देखो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP 40,000, ओपनिंग दिया है क्या कहीं पे? जस्ट चेक। हमने जब प्रॉब्लम्स रीड किया था तभी भी हमको ओपनिंग स्टॉक कहीं पे भी नहीं मिला था। सो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP इज 40,000, opening stock nil, and closing stock is 40,000, so minus 40,000. 0 minus 40,000 is minus 40,000। 0 में से अगर हम 40,000 माइनस करेंगे तो वो माइनस 40,000 बचेगा। अभी फिनिश गुड्स देखते हैं। फिनिश गुड्स का भी ओपनिंग स्टॉक नहीं है, कहीं पे भी ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नहीं है। प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड भी नहीं है, लेकिन क्या दिया है? परचेज ऑफ फिनिश गुड्स 80,000। तो हम क्या करेंगे ना, फिनिश गुड्स में ये ओपनिंग क्लोजिंग निकाल देंगे और सिर्फ क्या लिखेंगे? परचेज ऑफ फिनिश गुड्स परचेज ऑफ फिनिश गुड्स एंड अमाउंट इज 80,000। तो टोटल कितना हुआ फिनिश गुड्स का? टोटल ऑफ फिनिश गुड्स इज 80,000। अभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में देखते क्या क्या है। डायरेक्ट वेजेस था कहीं पे, तो वेजेस 70,000, रफीक डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी था 50,000, फैक्ट्री डायरेक्ट depreciation on patents 10,000, depreciation on patents 10,000। next depreciation on machinery 20,000, नेक्स्ट यहाँ से एक बार चेक कर रहे हैं हम लोग लाइन से कि कौन सा आइटम हमने लिया है, कौन सा रह गया है। सब हो गया, बस ये सेल ऑफ स्क्रैप माइनस करना है तो वो ले लेंगे। सेल ऑफ स्क्रैप
लेस सेल ऑफ स्क्रैप, तो यहाँ पे माइनस 20,000। फाइनल फिगर निकालो तो calculate the figure balance. डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना आया? 50, करेक्ट, 1,30,000, करेक्ट। Okay, so now cost of goods sold. Cost of goods sold. Cost of goods sold. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे। रानी अपना कैमरा ऑफ करो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना होता है, लेटेस्ट चेक सबका टोटल 5,70,000 प्लस ये -40 है तो -40 करना पड़ेगा, प्लस 80,000 प्लस 1,30,000, सो 7,40,000 आया। अभी 7,40,000 आपका सेल्स है 1950, 1950 माइनस 7,40,000 कितना होता है? इज इट 12,10,000? Is it 12,10,000? 19,50,000 minus 7,40,000. Is it 12,10,000? Yes, correct. अभी add operating income. Add operating income. Operating income is nil. प्रॉब्लम में ऑपरेटिंग इनकम दिया ही नहीं है तो nil. Less non operating income. Non operating income, sorry, less operating expenses, very sorry, less operating expenses। अभी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में फर्स्ट हेड आता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, करेक्ट। मैं जस्ट फॉर्मेट कॉपी कर रही हूँ तो इजी हो जाता है, फिर घड़ी घड़ी करना नहीं पड़ता है। ओके, सो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में देखते हैं क्या क्या है। ऑफिस जहाँ जहाँ लिखा होगा, स्टाफ सैलरीज 1,50,000, स्टाफ सैलरीज 1,50,000। नेक्स्ट, ऑफिस रेंट एंड इंश्योरेंस 45,000, ऑफिस रेंट एंड इंश्योरेंस
40,000. Next, printing and stationery 5,000. Printing and stationery 5,000. Next, ऑफिस में देखो और क्या क्या है. What is there in office? Repairs of computers 5,000. Okay, correcting. Repairs of computers 5,000. Next, और कुछ भी नहीं है ऑफिस में, इतने ही आइटम्स हैं ऑफिस में. चलो कैलकुलेट द टोटल. ऑफिस एक्सपेंसेस का टोटल कितना होता है? व्हाट इज द टोटल ऑफ ऑफिस एक्सपेंसेस? इज इट 2,05,000 करेक्ट? 1,52 लाख. यस, 2,05,000 करेक्ट है. अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं. क्या क्या दिया है? सेल्समैन सैलरी 25,000. सेल्समैन सैलरी 25,000. Then और क्या था सेल्समैन सैलरी के बाद? एग्जीबिशन कमीशन अलाउड 5,000. कमीशन अलाउड 5,000. नेक्स्ट, और एक आइटम है कमीशन अलाउड के बाद. एग्जीबिशन एक्सपेंसेस 35,000. एग्जीबिशन एक्सपेंसेस 35,000. और कुछ है? जस्ट चेक. एनीथिंग एल्स? हो गया. दैट्स ऑल. टोटल देखो कितना है? 65,000. करेक्ट. अभी फाइनेंस एक्सपेंसेस में ये प्रॉब्लम में एक पॉइंट था बैंक चार्जेस. पहला प्रॉब्लम था जहाँ पे फाइनेंस एक्सपेंसेस हमको दिया है, दैट इज बैंक चार्जेस एंड अमाउंट इज 10,000. तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे फाइनेंस एक्सपेंसेस, वहीं पे लिख देते हैं बैंक चार्जेस एंड अमाउंट इज कितना है? व्हाट इज द अमाउंट? 10,000. So finally the total is 2,80,000. Operating expenses is 2,80,000. Check करो right है या नहीं है. Please check whether it's correct or not. Correct है. Now let us calculate profit before interest. 12,10,000 plus 0 is same, minus 2,80,000. What is your operating profit before interest? 12,10,000 minus 2,80,000. करेक्ट आकाश. पहली बार किसी लड़के ने आंसर दिया है. आकाश, वेरी गुड. अभी 12,10,000 माइनस 2,80,000 करो. वेदर यू आर गेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट. व्हाट इज योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट? ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमको माइनस करने हैं.
तो फाइनली इसका बैलेंस बताओ कितना आता है। फाइनली बैलेंस बताओ कितना आता है। व्हाट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट? 9,30,000 करेक्ट। ऑपरेटिंग अभी लेस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ये प्रॉब्लम में भी था इंटरेस्ट, किधर गया? डिबेंचर इंटरेस्ट 50,000, चलो माइनस करेंगे, -50,000. So your operating profit is, net operating profit is 8,80,000. ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट में से इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर माइनस किया तो यू गेट -50,000 करने के बाद आपको नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया 8,80,000. इज इट करेक्ट? यस, वेरी गुड गोविंद, देख के ही आंसर दिया, पर ठीक है, दिया तो सही। अभी नॉन ऑपरेटिंग इनकम में देखते हैं क्या है। ऐड नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। देखते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या है। ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट एक ही है शायद नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो हम लोग डायरेक्टली उसको आउटर कॉलम में लिख सकते हैं। We'll write directly in the outer column, and amount is 40,000. 40,000 less non-operating expenses, loss on sale of machinery है 10,000. एक ही item है, again in directly in the outer column we can write. कितना लॉस है? 10,000. So minus 10,000. So finally the balance net profit before tax is how much? That is 8,80,000 plus 40 minus 10. That comes to 9,10,000. 880 plus 40,000 is 920. 920 minus 10 is 9,10,000. सोहेल वेरी गुड। आज तो मेरी लक ही अच्छी है, आज सब अलग अलग स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। आई फील सो हैप्पी टुडे, आई हैव अ ग्रेट डे। अभी देखते हैं टैक्स दिया है क्या। यस दिया है, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स लेस टैक्स, यहाँ पे लिखा है 2 लाख। सो लेस टैक्स 2 lakhs। सो लेस करना है हमको, लेस टैक्स 9 लाख में से 9,10,000 में से 2,10,000 अगर माइनस करेंगे तो बैलेंस कितना बचेगा? 7,10,000। करेक्ट है? $9,10,000 minus 2 lakh is 7,10,000. ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे हमने लिख के रखा था, ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट इज 2,40,000। 2,40,000. So your balance is 7,10,000 plus 2,40,000 is 9,50,000. अभी लेस अप्रोप्रिएशन, अप्रोप्रिएशन में देखते हैं क्या है। अप्रोप्रिएशन में यहाँ पे लिखा है, देखो, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 1,50,000. So,
transfer to general reserve is 1,50,000. एक ही आइटम है, बाकी कुछ नहीं है, तो हम इसको डायरेक्टली आउटर कॉलम में ले सकते हैं। लेस ही करना है, एप्रोप्रिएशन लेस होता है, सो लेस एप्रोप्रिएशन transfer to general reserve, that is minus 1,50,000. So balance carried down to balance sheet, या फिर जिसको हम retained earning भी बोलते हैं, वो कितना है 9,50,000 प्लस मतलब minus 1,50,000, that is 8 lakh. Yes, correct, Sohel. Is it okay? समझ में आया? अब क्योंकि हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे जाने वाले हैं, दैट इज नाउ एनालिसिस ऑफ दिस इनकम स्टेटमेंट। वर्टिकल फॉर्म आएगा तो ही एनालिसिस आएगा। आई होप सो यू ऑल हैव कंप्लीटेड। आपको प्रॉब्लम देखना है क्या? यहाँ पे भी पूछा है वर्टिकल रेवेन्यू स्टेटमेंट, चलो देखते हैं। आर यू ऑल वांट टू सी द प्रॉब्लम? देख लो चाहिए तो एक बार। मैम एक बार फिनिश गुड्स के इधर वो स्लाइड करो ना, मेरा भी थोड़ा सा रह गया है। ये रहा। यस यस यस। You have a right to ask me, मैडम ये छूट गया, आप वापस बता दो। I can. Okay. हो गया मैम, थैंक यू। Anyone else? किसी का कुछ रह गया है? Yes, no. चलो, let us move to the next problem. Problem number 10. The following balances appear in the books of measures Bhushan for the year ended 31st March 2017. You are required to prepare vertical form revenue statement. Prepare a revenue statement in vertical form. Opening stock कहाँ जाएगा? चलो बोलते जाओ, चैट बॉक्स में डालते जाओ। ओपनिंग स्टॉक क्या हो गया? आवाज नहीं आ रही है? ओपनिंग स्टॉक किसी का नहीं दिया है, मतलब ये रॉ मटेरियल है, WIP है, कुछ नहीं मालूम। हम लोग डायरेक्टली फिर इसको क्या लिखेंगे? यस, COGS। नेट प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल का नेट प्रॉफिट क्या आता है? ये पिछले साल के नेट प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? पिछले साल के नेट प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? यस, ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या बोलते हैं? ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, करेक्ट। ऑफिस रेंट, ऑफिस। नेक्स्ट, कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, एप्रोप्रिएशन। जनरल रिजर्व क्या होता है? एप्रोप्रिएशन। वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, करेक्ट। ऑक्ट्राई, COGS। ऑफिस स्टाफ सैलरीज, ऑफिस स्टाफ सैलरीज। ऑफिस ऑडिट फीस, ऑफिस एडवर्टाइजमेंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वेरी गुड। फाइनेंस एक्सपेंसेस, फाइनेंस एक्सपेंसेस, फाइनेंस, करेक्ट। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट।
Non-operating expenses. Very good. Depreciation on plant and machinery. Depreciation on plant and machinery. Direct expenses. Very good. Depreciation on furniture. Depreciation on furniture. Office. Depreciation on delivery van. Selling and डिस्ट्रीब्यूशन. वेरी गुड. क्या बात है, आप लोग बहुत होशियार हो गए हो एसवाई में आके. मजा आ रहा है मुझे आज आप लोगों के साथ. आई एम एंजॉयिंग. वेरी नाइस. गुड. एटलीस्ट सम आर टेकिंग प्रॉपर केयर. स्टडिंग ना. मेरे शीट पे एनोटेशन करोगे ना. आई विल नॉट स्पेयर. हाँ, आई डोंट वांट एनीवन टू एनोट. और मेरा पेड वर्जन है, याद रखो. आप लोग कुछ भी करोगे आई कैन फाइंड आउट कि किसने किया है. सेल्स रिटर्न. सेल्स रिटर्न. Sales return. Less from sales. Profit on sale of investment. Profit on sale of investment. Non-operating income. Loss by fire. Loss by fire. Non-operating expenses. Closing stock. Closing stock. COGS. Purchases. COGS. Postage and telegram. Postage and telegram office. Provision for tax. Provision for tax. Provision for tax. Tax. Less tax. Sales. First item आपका. First item. इसी से तो start होगा ना. Dividend on shares held. मतलब इसका simple मतलब होता है dividend received. Non-operating income. Correct. Carriage outward. Carriage outward. Selling and distribution. Warehouse expenses. Warehouse expenses. Selling and distribution. Perfect. Import duty. Import duty. Import duty. क्या हो गया. Import duty कहाँ जाएगा. COGS. Correct अनुष्का. COGS. Import duty. COGS. Okay. Raw material. So can you do this problem homework? सिंपल है ना. इसमें याद रखना WIP फिनिश गुड्स का ब्रेकअप नहीं है. WIP और फिनिश गुड्स नहीं है. सीधा COGS में हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेंगे एंड विल मूव फॉरवर्ड. ओके. कैन वी मूव अहेड. Can you do this as homework? Yes. So this is homework.
अब कल हम लोग ऐसा प्रॉब्लम करेंगे, कल हम लोग ये लास्ट के 2 प्रॉब्लम्स करने वाले हैं जिसमें ना हम लोग बैलेंस शीट भी बनाएंगे, विल बी प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट आल्सो एंड विल आल्सो बी प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट एज वेल एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टुगेदर। मीन्स हमको आइडेंटिफाई करना है कि ये आइटम बैलेंस शीट का है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है, और बैलेंस शीट का तो कहाँ जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का तो कहाँ जाएगा। जैसे ये प्रॉब्लम देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है, प्लांट एंड मशीनरी दिया है। इक्विटी शेयर कैपिटल जाता है शेयर होल्डर्स फंड में, प्लांट एंड मशीनरी जाता है टेंजिबल एसेट में, परचेसेस जाता है सीओजीएस में। आर यू गेटिंग इट? मीन्स यहाँ पे हमको मिक्स करके दिया हुआ एंड वी नीड टू सेपरेट इट आउट। वेजेस सीओजीएस, बैंक ओवरड्राफ्ट इज नॉन क्विक लाइबिलिटी, ऑफिस रेंट ऑफिस, एडवर्टाइजमेंट सेलिंग, फाइनेंस एक्सपेंसेस फाइनेंस, इनकम टैक्स लेस टैक्स, preliminary expenses not yet written off is your miscellaneous expenditure, bills payable is your current liability, quick liability, net profit brought down from previous year is opening balance of profit and loss account, opening stock COGS। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, मिक्स आइटम्स दिए हैं। तो मिक्स आइटम्स अगर दिए हो तो हाउ डू वी वर्क, किस तरह से हम हमारा प्रॉब्लम करेंगे दो, तो इन दैट केस वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बोथ प्रॉफिट एंड लॉस ऑल्सो एंड बैलेंस शीट ऑल्सो, दोनों साथ बनाना पड़ेगा। तो पहले हम लोग पीएल बनाएंगे और फिर बैलेंस शीट बनाएंगे। तो इट इज अ कंबाइंड प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम हम लोग कल करेंगे। कल ऐसे 2 प्रॉब्लम है, एक ये वाला और ये ऊपर वाला, दिस प्रॉब्लम। ये तो पूरा ट्रायल बैलेंस का प्रॉब्लम है। सो विल डू दिस टुमारो। आज होमवर्क देती हूँ मैं आप लोगों को। होमवर्क एक प्रॉब्लम दिया है, लेकिन कुछ ही स्टूडेंट्स है जो करके मुझे भेजते हैं। ये वाला प्रॉब्लम भी, डीवाई बीकॉम नवंबर 16 का जो प्रॉब्लम है, ये भी दोनों है। इनकम स्टेटमेंट भी बनाना है और बैलेंस शीट भी बनाना है। तो कल हमारा टारगेट है ये खत्म करना है। ये जल्दी समझ में नहीं आता है, तो सी दैट यू ऑल आर देयर फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर। एंड वन मोर थिंग, कल तो नहीं पॉसिबल होगा, मे बी वेडनेसडे विल बी स्टार्टिंग। वेडनेसडे ना हम लोग एनालिसिस पार्ट पे जाएंगे, सो दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो टुडेज लेक्चर आई थिंक आई एम वाइंडिंग अप।